स्टार्ट है सर। स्टार्ट है। चलो आ जाओ सब, गुड मॉर्निंग, आ जाओ। आज हम लोग सप्लीमेंट्री बुक जो है इसका पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फुटप्रिंट्स विदाउट फुट का ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ठीक है ना। द मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रायम्फ इज विक्ट्री। विक्ट्री। नाउ विक्ट्री ऑफ व्हाट? विक्ट्री ऑफ अ सर्जरी। विक्ट्री ऑफ अ सर्जरी ऑफ अ डॉग। सब आ जाओ फटाफट जल्दी, 2-3 मिनट वैसे ही लेट हो जाएगा। ठीक है। सो बिफोर आई एक्सप्लेन द एंटायर चैप्टर टू यू, आई जस्ट वांट टू गिव यू अ ब्रीफ introduction to what exactly this entire chapter is all about. It's a very good lesson. This chapter is based on the theme of love towards, affection towards, care towards pet animals. Okay. Now, who is the pet animal in this story? That's a dog. The name of the dog is Tricky. The name of the dog is Tricky, na? Tricky, huh? Tricky. Tricky is a dog. Tricky is a dog. James Harriet. James Harriet is the narrator of this story. Okay. Mrs. Pumphrey or Mumphrey, I don't exactly remember the spelling. It's Pumphrey, Pumphery. Okay. Mrs. Pumphery. Mrs. Pumphrey, the owner of the dog. The owner of the dog. Okay. These are the three characters based on whom the entire chapter is, and the most important character is Tricky. The first and foremost important character is Tricky. The second important character is James Harriet, who is the narrator of the story, and the second one and the last one is Mrs. Mumphrey. Now, what exactly happens? Let's see. Tricky, the dog, has become ill. Tricky has started eating too many different kinds of food which he could not digest, and Tricky's owner, Mrs. Mumphrey, is extremely worried about Tricky's condition. Now, James Harriet, who is a surgeon by profession, in reality also he is a surgeon by profession. So James Harriet has also some association with Mrs. Mumphrey and Tricky. James Harriet knows Mrs. Mumphrey and Tricky relation. James Harriet is the family doctor of Mrs. Mumphrey, and because why? Because Tricky is Mrs. Mumphrey's dog. So from dog's point of view, James Harriet has some relation with Tricky. Now, one day, Tricky the dog feels the dog is not in a condition even to walk. The dog is actually feeling very weak, he feeling very tired, and he is vomiting. Now, the narrator James Harriet has taken Tricky to his dispensary, to his hospital, and there he performs a surgery based on this dog Tricky. And finally the surgery is successful. The surgery becomes successful. So this chapter is about the trump of surgery, means the victory of the surgery of a doctor by the narrator James Harriet. James Harriet, the doctor, who is also the narrator of this story, he describes how
the surgery was performed based on this dog, and was this surgery of the dog successful? Yes, of course. The surgery. Good morning, sir. Good morning. Yes, of course, the surgery was a very successful one. Tricky came out of the illness and Tricky started living a very healthy, fresh life. Initially, he had some bouts of vomitings. He was not behaving properly. He had stopped eating even his, favorite food, which finally disturbed Tricky's owner as well as the narrator, James Harriet. Now, this is what exactly the entire story. The summary of the entire story is. Now I am going to explain the meaning of the story. Ready, each and every line. It's a long story. Usually आपका ये जो है ना, ये जो book है जिसमें 10 चैप्टर है, ये सब आपके लॉन्ग चैप्टर्स हैं. तो you will have to keep some patience. अगर आप चाहते हैं कि लाइन बाय लाइन में एक्सप्लेनेशन दूँ तो you will have to give time. आपको वक्त देना पड़ेगा और एक महीने में आपका ये पूरा चैप्टर खत्म, ये पूरा का पूरा जो है बुक खत्म हो जाएगा. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. ट्रम्प ऑफ सर्जरी. ट्रम्प ऑफ सर्जरी मीन्स विक्ट्री ऑफ सर्जरी. दैट मीन्स द सर्जरी व्हिच वाज डन फॉर द डॉग ट्रिकी वाज एक्सट्रीमली सक्सेसफुल एंड द सर्जरी वाज डन बाय जेम्स हैरियट. क्लियर है? चलिए अब हम डिटेल्स पढ़ेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू गेट द डिटेल्स ऑफ द एंटायर चैप्टर. It says in the beginning that Tricky, a small dog, is pampered by his rich mistress. Who is the rich mistress here? Mrs. Mumphrey. Mrs. Mumphrey loves her dog very much. The dog is very much close to Mrs. Mumphrey's heart. She overfeeds him and he falls seriously ill. Mrs. Mumphrey overfeeds Tricky. Mrs. Mumphrey gives Tricky food even more than Tricky can consume, Tricky can eat. And just because of overfeeding of the food, just because of overconsumption of food, Tricky finally falls ill. Does the veterinary surgeon perform an operation? Now, who is the veterinary surgeon here? James Harriet. So, James Harriet, does he perform a surgery? Yes, he performs a surgery. And does the dog recover from that illness? Yes, of course, the dog recovers from the illness. So, how the surgery took place? The entire chapter is based on these two questions. The initial two questions that does the veterinary surgeon perform an operation? Yes, of course. So, how the surgery was performed based on the doctor? So, we are going to get the answer to these questions in the entire chapter. Now, let's start the chapter. Before we read this part of the chapter, the first part of the chapter, there are 3 questions. Let's look at the questions first. And at the end of the reciting of the or understanding the part of the chapter, you yourself would be able to answer all these questions. The first question is, why is Mrs. Mumphrey worried about Tricky? What is the reason based on which Mrs. Mumphrey is worried about Tricky? What was the reason? So you will get to know the answer yourself. What does she do to help him? Is she wise in this? When Tricky falls ill, what does Mrs. Mumphrey do to take Tricky out of the war situation, out of his illness? And whatever Mrs. Mumphrey does to Tricky to take him out of the illness, does that really work upon Tricky? Yes. वो भी इसका भी आंसर हम देखेंगे. And who is I in the story? So जहाँ कहीं भी wherever you find the word I in the entire story, that means the narrator, the writer of the story, who is the narrator is involved in this story, means the story is a true experience of James Harriet. Who is I here? I is James Harriet, who is the writer of the story, who is also the narrator of the story. So the entire story has been explained in first person. Entire story has been explained in first person. Surely. So wherever I comes, now take it, narrator means James Harriet. Now let's start. Says I was really worried about Tricky this time. So who is I here? I is the narrator, means James Harriet. James Harriet says that he is extremely worried about looking at the pathetic condition of whom? Of the dog Tricky. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and was shocked at his appearance. All of a sudden, one day, the narrator found Tricky walking on the street with his mistress. James Harriet stopped his car
and beheld, that means looked upon the situation of the dog. So he had become hugely fat, like a bloated sausage with a leg at each corner. His eyes, bloodshot and rheumy, stared straight ahead, and his tongue lolled from his jaws. Says that when James Harriet, the narrator, saw Tricky, he is actually describing the appearance of the dog. Appearance. James Harriet is describing the appearance of the dog when he saw him for the first time through these lines. कैसा हो गया था ये डॉग? दिस डॉग हैड बिकम फैट, काफी मोटा हो गया था, ओवरवेट हो गया था, क्योंकि इसकी मालकिन ने, मिसेस मम्फ्री ने इसे बहुत खाना खिलाया, इतना खाना खिलाया कि इसे खाने की आदत पड़ गई और वो फूड अंदर जाकर के ओवर रिएक्ट कर रहा है, अननेसेसरी ओवर रिएक्ट कर रहा है। इसकी जो आंखें थी, his eyes were bloodshot, लाल थी, and rheumy. When something is rheumy, water discharges from it. आंख से जब पानी गिरने लगती है ना, उसे रूमी आई कहते हैं। आंखों से जब पानी वाटर गिरने लगती है या किसी म्यूकस मेम्ब्रेन से जब नोज से या आई से जब पानी गिरने लगती है, उसे रूमी पार्ट ऑफ द बॉडी कहते हैं, मतलब रूमी नोज कहते हैं, रूमी आईज कहते हैं। तो आंखों से उसके पानी गिर रहा था उस डॉग के। एंड दैट डॉग वॉज लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आईज ऑफ जेम्स हैरियट, और वो किसे देख रहा था? जेम्स हैरियट को देख रहा था, और उसके जीभ जो थे वो लॉल्ड थे। लॉल्ड मीन्स नीचे की तरफ बेंड थे, झुके हुए थे। Mrs. Mumfree hastened to explain he was so listless. Now Mrs. Mumfree saw that James Harriet was there, so Mrs. Mumfree, the owner of the dog, straight away goes to James Harriet and says, what? He was so listless. What is the meaning of the word listless? Listless means unenergetic, devoid of energy, feeble, कमजोर महसूस करना। जब आप में एनर्जी नहीं हो, दैट मीन्स यू आर लिस्टलेस। सो मिसेस मम्फ्री दौड़ते हुए जेम्स हैरियट के पास जाती है और कहती है कि मेरा जो डॉग है ट्रिकी, ही हैज बिकम अनएनर्जेटिक, ही हैज बिकम फीबल, काफ़ी कमज़ोर हो गया है। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लगता है इसके अंदर कोई एनर्जी ही नहीं है। I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up. Some malt, underline कर लेना इस लाइन को। Some malt के बाद some malt and cod liver and bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. Mrs. Mumfree says that during the last few months, she had been feeling that her dog was suffering from what? Malnutrition. That was, the dog was devoid of nutritious food. So she started giving him what? She started giving him Horlicks. She started giving him cod liver and some malt. ठीक है ना? कुछ सीरियल्स, कुछ कॉड मछली के बने हुए जो तेल होते हैं, ठीक है ना, वो देना स्टार्ट करती है जिससे एनर्जी आती है, और हॉर्लिक्स देना स्टार्ट करती है ताकि ये एनर्जी फील करे डॉग। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। जेम्स हैरियट कहते हैं कि मैंने आपको कुछ दिन पहले कहा था कि आप ट्रिकी को स्वीट्स देना बंद करें, मिठाइयाँ देना बंद करें। तो क्या आपने मिठाइयाँ देना बंद किया है? ओह, आई डिड फॉर अ बिट, but he seemed to be so weak I had to relent. Relent means give up. To give up a harsh behavior. Relent means give up. छोड़ देना कोई काम करना, हार मान लेना, सरेंडर कर देना, ठीक है ना। Relent means हार मान लेना, छोड़ देना। तो जब जेम्स हैरियट ने पूछा कि last time when you met me I suggested you to cut down on the sweet items which is given to the dog. So did you follow my advice? Did you follow my instruction? इस पे जवाब देती है मिसेस मम्फ्री, oh I did for a bit. थोड़ा सा मैंने कंट्रोल किया था, मैंने स्वीट्स के जो नंबर्स थे वो कम किए थे, कम मिठाइयाँ मैं देता था
डॉग को खाने के लिए देती थी खाने के लिए, बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। लेकिन मेरा कुत्ता इतना कमजोर दिखता था ना मिठाई के बगैर कि मुझे हार मान लेना पड़ा और मैंने फिर मिठाइयाँ देनी स्टार्ट कर दी डॉग को। It does love cream cakes and chocolates, so I can't bear to refuse. मेरे डॉग को स्वीट्स, चॉकलेट्स, केक्स इतने पसंद है कि मैं इसे अपने बेटे की तरह मानती हूँ, और मेरा बेटा किसी चीज़ के लिए यर्न करे, किसी चीज़ की डिज़ायर करे और मैं उसे सप्लाई ना कर पाऊँ, ऐसा हो नहीं सकता है। तो मैंने आखिर में आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना बंद कर दिया और इस डॉग की बात मानते हुए उसको स्वीट्स देना स्टार्ट किया, केक्स देना स्टार्ट किया। तो मुझे लगता है आज ये जो हालत हो गई है किसकी, ट्रिकी की, दिस इज द रिजल्ट ऑफ माई नेग्लिजेंस, दिस इज द रिजल्ट ऑफ गिविंग हॉर्लिक्स, गिविंग cod liver oil, giving malt, giving sweets, giving cakes. Because of all these things, the dog has become overfed. So I looked down again at the little dog. तो जेम्स हैरियट फिर से एक बार उस कुत्ते को गौर से देखते हैं. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. Now he had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night, and I wondered about all the things Mrs. Mumphrey hadn't mentioned. Now here, James Harriet says that I know what is the weakness of the dog. The weakness of the dog is good food, particularly sweets and cakes. So it was not the fault of Mrs. Mumphrey. Mrs. Mumphrey loved her dog so much. She took her dog not as a pet but as her own child. So it was the behavioral problem of Tricky that he wanted this kind of extra calorie given food, and that's why his situation has become like this. He further asks, are you giving him plenty of exercise? आगे पूछते हैं कि ठीक है, आप ये सारे फूड तो इसे दे रहे हैं, आप हॉर्लिक्स दे रहे हैं, कॉड लिवर दे रहे हैं, मॉल्ट दे रहे हैं, स्वीट्स दे रहे हैं, केक्स दे रहे हैं, कोई बात नहीं है। जितनी कैलोरी अंदर जा रही है, क्या उतनी कैलोरी कंज्यूम हो रही है? क्या आप उसे एक्सरसाइज दे रही है डॉग को? Well, he has his little walks with me, as you can see, but Hawking, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. He says that मेरा जो अभी आप देख रहे हैं कि मैं इसे टहला रही हूँ, लेकिन जो टहलाने की और एक्सरसाइज कराने की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक मेरे गार्डनर की थी, और गार्डनर का नाम था हॉकिंग। तो हॉकिंग को लम्बैगो हो गया है, उसे मस्कुलर पेन हो गया है, उसको कुछ दिनों से छुट्टी पे है, तो उसके एब्सेंस की वजह से द डॉग इज नॉट गेटिंग प्रॉपर एक्सरसाइज। लेकिन जब भी मेरे पास वक्त मिलता है मैं इसे वॉक के लिए ले जाती हूँ। अभी आप देख भी सकते हैं मैं इसे वॉक के लिए ही लाई हुई हूँ। ओके, आई ट्राई टू साउंड सीवियर। साउंड सीवियर मतलब बी सीरियस। ट्राई टू सीवियर मतलब यहाँ पे हो जाएगा सीरियस। अब सी द पैराग्राफ, सी द, आपको इस सप्लीमेंट्री बुक को आप कहानी की तरह नहीं समझे, आप इसकी क्रिटिकल मीनिंग निकालने की कोशिश करें कि आखिर इन सारे सेंटेंसेस से, इन सारे स्टेटमेंट से, जो भी नरेटर बोल रहा है, जो मिसेस मम्फ्री बोल रही है, जो और लोग बोल रहे हैं, इसका एक्चुअली मीनिंग क्या निकल रहा है, हम इससे मीनिंग क्या निकाल सकते हैं। सी, हमें अभी तक ऐसा लग रहा है कि मिसेस मम्फ्री is more close to Tricky than James Harriet। अभी जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे पता चलेगा कि एक्चुअली में ट्रिकी से सबसे ज़्यादा अगर कोई प्यार करता है तो वो जेम्स हैरियट है। मिसेस मम्फ्री तो दिखावा कर रही है, या फिर उनकी प्यार में, उनकी चाहत में वो डिसिप्लिन नज़र नहीं आ रही है। वो प्यार करती है अपने डॉग को काफ़ी बेटे की तरह प्यार करती है, काफ़ी चाहती है, बट उनके प्यार में डिसिप्लिन नहीं है। जेम्स हैरियट किसी भी पेट डॉग को, तो है ही वेट डॉक्टर, वेटनरी है, वो तो वेटनरी सर्जन है, तो उसे तो डॉग से प्यार होगा ही। अब जब मिसेस जेम्स हैरियट को ऐसा फील होता है कि शी इज नॉट गिविंग प्रॉपर अटेंशन टू ट्रिकी, शी इज ओनली प्रोवाइडिंग द फूड मटेरियल्स टू ट्रिकी, नाउ ही टेक्स अ सीरियस स्टैंड। जेम्स हैरियट
thinks that now he has to do something. अगर वो कुछ नहीं करेगा as a doctor, तो मिसेस मम्फ्री के प्यार और लार और दुलार की वजह से एक दिन ट्रिकी की मौत हो जाएगी. तो उसे अब स्टैंड लेना है, उसे ही कुछ करना है, यानी कि नरेटर को ही कुछ करना है ट्रिकी के इल हेल्थ को सुधारने के लिए. Now let's see what happens. So he says that I try to sound severe. Now I really mean this. मैं अब सीरियस होने जा रहा हूँ और काफ़ी स्ट्रांगली सीरियस होने जा रहा हूँ. किसके लिए? ट्रिकी के लिए. ये कौन कह रहा है? जेम्स हैरियट कह रहा है. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. कह रहे हैं जेम्स हैरियट मिसेस मम्फ्री से कह रहे हैं कि अगर तुमने जो फूड दे रही हो तुम किसे ट्रिकी को, इस फूड की क्वांटिटी और अमाउंट और नंबर को अगर कम नहीं करोगी और इसे रेगुलर एक्सरसाइज नहीं दोगी, तो एक वक्त आएगा व्हेन ट्रिकी विल डिपार्ट फ्रॉम दिस प्लैनेट, गायब हो जाएगा इस प्लैनेट से. सो इसकी रक्षा करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि तुमने इसे पेट किया हुआ है, तुमने इसे पाला हुआ है. अगर तुमने इसे पाला है तो इसका केयर करना भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इसे कुछ ना हो इसकी केयर करना भी तुम्हारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है. For this is that you mustn't harden your heart and keep him on a very strict diet. अब तुमको अपना दिल थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सीरियस आपको भी होना पड़ेगा, कठोर होना पड़ेगा और इसको स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना पड़ेगा. यानी कि कैलोरी का कंजम्पशन ज़्यादा, ठीक है ना, मतलब कैलोरी का इंटेक ज़्यादा और कैलोरी का बर्निंग ज़्यादा कम होना चाहिए इंटेक, और कैलोरी का बर्न होना चाहिए ज़्यादा. यानी कि कम खाना खाए और एक्सरसाइज ज़्यादा करे. ये जो फूल गया है, मोटा हो गया है ना, ठीक है ना, तो इसकी थोड़ी सी शेप साइज सही आएगी, इसका बॉडी फिट हो जाएगा. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है. Mrs. Mumphrey wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet. I'm sure you're right, but it is so difficult, so very difficult. She set off, head down along the road, as if determined to put the new regime into practice immediately. इसमें word है regime. Regime मतलब क्या होता है? वैसे तो regime का मतलब होता है शासन काल. अकबर regime, बाबर regime, तुगलक regime, मोदी regime, गांधी regime, जो जितने साल तक शासन में रहा, कांग्रेस regime. लेकिन यहाँ regime का मतलब होता है prescribed diet and exercise. Regime means prescribed diet and exercise, है ना. जब आप किसी फिजिशियन के पास, डाइटिशियन के पास, वेट डॉक्टर के पास जाते हैं अपने हेल्थ की प्रॉब्लम को लेकर के कि मैं काफ़ी मोटा हो गया हूँ, मेरी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गई है, मेरी शुगर बढ़ गई है, मेरी किडनी खराब हो गई है, मुझे स्टमक पेन होता है, तो वो आपको कुछ मेडिसिन के साथ आपको कुछ डेली प्रैक्टिस करने के लिए, कुछ पर्टिकुलर डाइट नहीं खाने के लिए, कुछ पर्टिकुलर डाइट लेने के लिए और कुछ एक्सरसाइज करने के लिए कहते हैं. ये जो प्रिस्क्रिप्शन होती है ना कि आप ये सारे काम करेंगे और ये सारे खाना खाएंगे, दैट इज कॉल्ड प्रिस्क्रिप्शन. सो अब यहाँ पे डॉक्टर कौन है? जेम्स हैरियट है. तो जेम्स हैरियट ने कहा कि अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना पड़ेगा और रेगुलरली एक्सरसाइज करना पड़ेगा. किसे? ट्रिकी को. I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his a little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. He struggled on, trooping in his harness. I thought it would be long before I heard from Mrs. Mumphrey. Now, इतना सुनने के बाद मिसेस मम्फ्री अपने घर की तरफ ट्रिकी को लेके टहलते हुए निकल जाती है. जब वो जा रही होती है तो जेम्स हैरियट गौर से देखते हैं मिसेस मम्फ्री को, उस लेडी को, और ट्रिकी को, दोनों को गौर से देखते हैं घर जाते हुए. उन्हें ऐसा एहसास होता है कि मैंने ना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है. किसे? मिसेस मम्फ्री को. शायद मिसेस मम्फ्री ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाएगी. शायद मिसेस मम्फ्री
प्रॉपर डाइट नहीं दे पाएगी, स्ट्रिक्ट डाइट नहीं दे पाएगी, रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं करवा पाएगी, किससे, ट्रिकी से, और हो सकता है कि उनके इसी लार प्यार की वजह से ट्रिकी एक दिन इस प्लैनेट से 9-2-11 हो जाए, ऐसा ये सोच रहे हैं। उनको ऐसा कन्फ्यूजन है कि शायद ट्रिकी का प्रॉपर केयर नहीं कर सकती मिसेज मम्फ्री, क्योंकि मिसेज मम्फ्री खुद ही एक बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल वुमन है, रिस्पॉन्सिबल औरत है वो। उन्हें एहसास नहीं, he had a great feeling that one day he was going to receive a call from Mrs. Mumphrey that the situation, that the health condition of Tricky was worsening, it has worsened, and he had to be finally hospitalized into the surgeon into the hospital of James Harriet. James Harriet को ये बात बिल्कुल पता था कि जो अभी ट्रिकी की कंडीशन है, वो जितना मोटा हो गया है, उससे स्ट्रिक्ट डाइट नहीं दिया जाता, उसे एक्सरसाइज नहीं कराया जाता, उसकी आंखों से रूमी वाटर हो गया, आंखों से उसका पानी बह रहा है, वो लेस एनर्जेटिक फील कर रहा है, वो लिस्टलेस फील कर रहा है, उसके अंदर ताकत महसूस नहीं होती है, उसे चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, उसके साथ जो गार्डनर रिंग थ्रोइंग गेम खेलता है गार्डन में वो गायब है। उन्हें पता था कि मिसेस मम्फ्री जिस तरह की रिस्पॉन्सिबल वुमन है, इनके इर्रिस्पॉन्सिबल वुमन है, उनके इस इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से बहुत बुरे हेल्थ चक्कर में फंसने वाला है कौन, ट्रिकी। और एक दिन इनके पास फ़ोन जरूर आएगा मिसेस मम्फ्री का कि प्लीज़ आइए और मेरे ट्रिकी का इलाज कीजिए, क्योंकि इसकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई, बद से बदतर हो गई है। इन्हें इस बात का एहसास होता है, और एक दिन ऐसा भी होता है। जब उस दिन ऐसा होता है तो क्या होता है कि वो उस दिन बात करेंगे जिस दिन अगला क्लास होगा। चलिए अब इसको सेल्फ स्टडी आप लोग कीजिए।